Uh, a very good morning, dear participants. Welcome to this session number 5 on Introduction to Object-Oriented Programming. It will be delivered by Sri Manish Rathore. He is working presently serving as a superintending engineer at Farakka Barrage project under Ministry of Jal Shakti. Sir has experience earlier in the design wings. He worked in E&NE designs, E&N, HCD, Heidel Civil Design, E&NE Directorate, East and Northeast Directorate of Central Water Commission headquarters. And subsequently, he served as a core faculty member of National Water Academy as Deputy Director. And thereafter, he worked as deputy director at Narmada Control Authority, and now, as I said, he is serving as SC Superintending Engineer at Farakka Barrage Project, which is a organization under Ministry of Jal Shakti. So this session is meant for giving you conceptual clarity on the object-oriented programming. So I welcome Manish Rathore, sir, to deliver today's session. Sir, we have started with the basics on Monday, and we have covered data types, data structures, then loops, control flow, conditional statements, functions. And now today afternoon we will also be having a session on error handling and file handling. So you can cover everything related to object-oriented programs introduction, so that they will have clarity on what is meant by object, what is meant by class, and all the other aspects. Thank you, sir. Thank you very much, Chaitanya. I would like to apologize for the delay. I was in a related meeting with sir. So I did not join. Sir, sorry to disturbing, but you are not audible, sir. Sir, Your thoda audio is not clear, sir. slight volume issue. Okay. Is it audible now? Is it audible now? Sir, try to increase, sir. Okay, let me change the microphone. Is it audible now? Is it audible now? Still problem, sir. Audible, sir, but it is not that much clear, sir. Okay. Now is it audible? I changed the microphone. Yeah, you Sir, can use the microphone, sir. That will be okay. if headphones are there, yeah. I will have to. Audible now? Not much clear, sir. Not much clear. Let me connect again. Okay, sir, no issue. Yeah. Audible now? Sir, still it is you are audible, but it is low. Volume is still low. Okay, just a second. Is it okay? Yeah. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Is it clear? Slightly you can increase. Slightly. I will just get close to the microphone. I will just connect it from my laptop.
it's causing some troubles. I'll Yes, be sir. sharing my screen from my desktop and I'll be speaking in the laptop. So my eye contact might not be perfect. Okay. So let me just. Okay, I hope you are able to see my screen. Yes, sir. Yes, So the screen is being shared from desktop and I'm speaking using the microphone of the laptop. So friends, really sorry for the delay. Technology reduces the distances, but sometimes it may cause some problems that we just faced today. Just a second. Okay. So friends, very good morning. Today we'll be talking about object-oriented programming. Object-oriented programmings are a kind of high-level programming. So initially we started with the assembly languages, which were the instructions directly conveyed to the processor. Then we came to the user-friendly languages like C and like Basic, QBasic, and so on. Then we migrated or we upgraded or we evolved. Human beings, we evolved our programming to object-oriented programming, in which the objects and classes play the major role, in which the most of the content, how the program is working, is hidden, and only the component which is actually of use is shown to the user. So not everything is visible to the user. It's only the content which is actually important for the user is shown to the user, and is most of the programming or most of the processing which is being done is done in a kind of black box. So user is isolated from the complicated part of it, and it is given only an interface to interact with that program. Like for example, when you are filing an income tax, you don't care how the program is calculating it. Okay, you just need an output. Yes, this is my taxable income, and this will be my tax which is required to be paid. This will be the cess, and this will be the final tax outstanding. So how it is calculating, that you don't care, you just need the answer for it, right? So this is what the basic concept of object oriented programming is. So let us start with the session. Why it was required to migrate to object oriented programming? uh, the answer is to overcome the shortcomings or limitations of the procedural programming. So procedural programmings are also kind of high level programming, but the objects are not present. In a procedural programming, you have to go step by step. All the procedures, all the algorithms, all the subroutines, all the functions, they have to run in a sequence. Okay, it's not a modular programming. So you cannot use a part of another program because the sequence will break. Okay, in case of object-oriented programming, a few modules of one program can be utilized in another program, and that's where the concept of libraries come into picture. That's where the concept of programming, the libraries come into picture. So in procedural programming, we have to go. The entire program has to go step by step. Means one step, unless one step is complete, you cannot go to the next step. So kind of parallel processing or parallel programming cannot be done, and libraries cannot be created. In case of object-oriented programming, you can create a module, like for example solving a quadratic equation, right? So quadratic equation is going to give you two outputs based on three inputs: ax square plus bx plus c. So these are the three inputs. A, B, and C are the three inputs, which is equal to 0. Ax square plus bx plus c equals to 0 is the equation. A, B, and C are the inputs, and x1 and x2, they are the outputs. They may be real, they may be imaginary. Into in form of a class, and when you give me the output of value of x1,
it will do all the calculation. It will, you just give a value of x1. How it is calculating, it will not, you don't care. You only want the answer, what is my x1 and x2 values. That's it. So, so that's the thing. I will just go to the next slide. So let's understand. I have already spoken a little bit about the difference between procedural and object oriented, but we'll go into the details. In procedural programmings, you have to give a list of instructions to the processor. So I will execute this line, then it will go to this line, then it will go to the next line, and so on. And there are functions with well-defined purpose. So functions can actually return a value. Okay, it can return only one value. Subroutines can do a lot of things, but they will not ever return any value. For example, I want to get the square root of a particular number. Square root. So square root of one number is one value. Okay, or a square of a value or a cube of a value. So that is one value which is returned. So you can write a function for it, and it will give you one output, one value as a return. And subroutines will never return a value. So you can have functions with well-defined purpose, and you can also have group of functions which are called as modules. So group of function that cannot be called at once, but yes, out of that module you can call one function at a time. It will give a value, then the program proceeds. So आपका क्या होगा, प्रोग्राम चल रहा है, बीच में आपका फंक्शन की नीड लगी, आपने उस फंक्शन को कॉल किया, उससे एक वैल्यू आई, उस वैल्यू के बाद में आप आगे बढ़ गए, like that. There are some variables which are available only to a specific part of the program, and there are some variables which are available to the whole program, to the entire program. If the variable which is available to a specific part of the program, then it will be called as a local variable. If it is available to the entire program, then it will be called as a global function, global variable. Okay, so you can have some local data. For example, if you want to calculate this cube root, cube of a variable, then you may have a square of a variable as a temporary variable. Then another multiply that square with the variable, you will get a cube and you will return it. So that kind of local data you can maintain within the function. That local data is not available to the other parts of the program. So like this, you have a main program which is running, okay, procedurally. So that main program can either call function 1, 2, or 3, and that function itself can call another function, or function itself can call itself. That also is possible in procedural programming. That generally it is used for solving series, okay, kind of sum of series or product of series, means a function which is calling itself. That also is possible in procedural programming. So you can have lots of functions which can call each other, and finally it will run in a sequence form. The main program is going to call some functions. The main program itself is a function. So main program itself is a function, means which will be called at the inception of the program. So that is a function which will call initially, and then that main program can call another functions. Those functions can call other functions, and those functions can call themselves as well. Okay, you can have some global data and you can have some local data. Global data is available to all functions. Local data are available only to the local function, within the function only. They are not available to the outside the function. So for example, I'm saying the data within function 1 will not be available to the subroutines or functions in the function 3. Similarly, global data will be available to all functions, and all functions can access and even modify the data which is global. It is not recommended basically. There are some limitations of the procedural programming. We are going to see those limitations. The first one is
there is no data protection. So if you are using a global variable which is accessible to all functions, then any function can modify that data. So जब तक आपका प्रोग्राम छोटा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रोग्राम बड़ा होता है and when you go into few thousands of lines of code, in that case it becomes very difficult कि कौन सा फंक्शन, कौन सा प्रोग्राम, कौन से वेरिएबल को एडिट कर रहा है. And you run into memory leakages, you may run into some kind of unintended behavior in which, जिसमें कि आप एक फंक्शन रन कर रहे हैं और उससे आपका कोई ग्लोबल डेटा मॉडिफाई हो जा रहा है और उसकी वजह से आपका नीचे प्रोग्राम में बग्स क्रिएट हो रहे हैं. So when the program becomes large, then it will become very difficult to protect your data, because the data which is to be shared with all the function has to be global. And once you make it global, any program, any function can modify that data. So that global variables are unprotected and they are liable and they are vulnerable to modified by a function which you don't want to modify it. Number two problem is that naming the variable becomes very difficult. You may have multiple variables, multiple functions which are being used. So it becomes very difficult to name the variables. So it becomes very difficult to maintain the data. आपने जब प्रोग्राम लिखा, आपको आपके माइंड में पूरा पिक्चर सेट है कि ये वाला वेरिएबल इस काम आ रहा है, ये वाला इस काम में आ रहा है, लेकिन जब आपके बाद में कोई दूसरा पर्सन उस प्रोग्राम को एडिट करना चाहेगा या अपडेट करना चाहेगा, तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज यू नो उस प्रोग्राम का नाम, उस वेरिएबल का नाम क्या है, उससे वो पता नहीं कर सकता कि इस वेरिएबल को कहाँ कहाँ कौन कौन सा फंक्शन मॉडिफाई कर सकता है. So there is no data protection. It becomes very difficult to maintain the program, update the program, and also understand the program. वो प्रोग्राम करना क्या चाहता है, ये चीज पता करने में ही आपको मुश्किल आती है. Every function Sir, has. can I ask one question, sir, here? Yes, please. Yeah. Sir, in that case, no, I am using some variables and somebody else is editing that one, then that value will be used in my program? That conflict will be there? Yes, this kind of conflict can happen. जैसे कि आप एक प्रोग्राम में, let's say you are a team which is working on building a program which is a big program, और Okay. आपने एक फंक्शन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एडिट करा जो आपके टीम मेंबर को नहीं पता है. इन दैट केस ही विल अज्यूम कि वो प्रोग्राम का वो वेरिएबल आपका प्रोग्राम एडिट नहीं कर रहा है. इन दैट केस देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट्स. In that case also, if my program is shared only, this will happen, no? Otherwise it is not happened. But no, global variables? Even if it is not shared, then also it may happen. Only the local variables are protected. जो local variable है केवल वही protected रहेंगे. Let's say आपको x1 कैलकुलेट करना है, किसी एक x1 कैलकुलेट करना है इसका आपका quadratic equation का. In that case, whatever you are determinant you are calculating, that may be a local variable. So that will be protected from others. But अगर आपने उस x1 को global variable बना रखा है, then x1 can be edited by someone else, some other function. In Or that case, even- this global variable I can make in my this thing, you know, some local variable, and I can use that one. It's not always possible. It's not always possible. Okay, आपको okay. क्या होता है, आपको कई बार में ग्लोबल वेरिएबल रखना ही पड़ते हैं. देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल टू मेक इट अ लोकल वेरिएबल. जैसे कि आपको दो फंक्शन के बीच में अगर किसी वेरिएबल को शेयर करना है, एक वेरिएबल आपका अगर इस एक फंक्शन का आउटपुट है, उसको आपको दूसरे के लिए इनपुट अगर बनाना है, इन दैट केस you have to make it a global variable, and some other function can change that global variable. That may cause problems inside your program, inside your Okay, sir. inside your program. Got it, sir. Thank you. It's Got not possible. I am saying it's not always possible to make it always. कुछ कुछ ऑप्शन में अवेलेबल होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है. Okay, sir. Thank you very much, sir. Sir, one What question. I have experienced is कि कोई और टीममेट नहीं है ना, हमको खुद को प्रॉब्लम आती है. What we are doing when we are creating a program जिसमें हमारे कई सारे ग्लोबल वेरिएबल्स है, हम खुद भूल जाते हैं थोड़े टाइम के बाद में, जब हम प्रोग्राम when we are running the program, when we are developing the program, after a few, maybe like a few weeks or few months, we tend to forget what that variable is meant for and which function is actually Using able that to program. modify that Okay. variable. And that becomes really difficult after some time, because we also tend to forget
And in case of classes, there is no problem in it. So that class only has a function and associated local variables with it. It will only give you output. There is a very few, very rarely we use global variables. We generally in object-oriented programming, global variables are not, I would not say they are not allowed. They are allowed. You can use global variables. But they are not recommended. You should always avoid using global variables in if you are using a object-oriented program. Okay, sir. Thank you. Otherwise, the So very basic advantage of object-oriented programming will be lost. Yes, please, Mr. Gautam. Sir, one question. Sir, can we give an access specifier to that variable so that it can be like protected or private? In some cases it is possible, in some languages it is possible, but again you tend to forget after some time that which variable is given access or not. So once I start telling you about object oriented program, you will come to understand the limits which are overcome by the object oriented program of the procedure. अगर ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इवॉल्व ही नहीं होती. आज की डेट में जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वेदर इट इज पाइथन, वेदर इट इज जावा, वेदर इट इज सी प्लस प्लस, all of them support objects, and that is the reason why you have so complicated programs which are run so efficiently. Because what we do is, जैसे for example मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया and that is a highly specific program. For example, let's say कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल टू डिजाइन द कैनाल, राइट. एक कैनाल को डिजाइन करने का मैंने एक प्रोग्राम डेवलप किया काफी मेहनत करके. व्हाट आई विल डू इज I will convert it to a class and publish it on GitHub. So everyone in the world can utilize that program. Okay, so that is a module that can be used by anyone. आप कार चलाते हैं, आपको ये पता है कि स्टीयरिंग घुमाने से कार इधर घूमेगी राइट साइड घुमाने से, और लेफ्ट साइड घुमाने से लेफ्ट साइड जाएगी कार. और आप कार मारुति की चलाओ या टाटा की चलाओ, डजंट मैटर. ओके, अब वो अंदर का मैकेनिज्म क्या है, यू डोंट केयर. अब उसमें किस तरह का गियर बॉक्स लगा है कि वो स्टीयरिंग को आप टर्न करते हो तो कितना डिग्री वो गियर बॉक्स टर्न करता है, उससे कितने फीट का उसमें या कितने मीटर या कितने एमएम का उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उससे पहिया कितना डिग्री घूमता है, और जो व्हील की साइज है उस हिसाब से कितना टर्निंग रेडियस बनता है. दैट इज ऑल मॉड्यूलर. यू हैव टू ओनली केयर कि मुझे स्टीयरिंग घुमाना है, कार मेरी टर्न कर जाएगी. सो दिस इज द काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इज अचीव्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो इसमें जो लाइब्रेरीज होती हैं, they are specifically designed to perform one function, and that entire module, that entire library, that entire class can be imported from one function to another function, to one program to another program, and that library can be shared across people across the world. That is the biggest advantage. Procedural programming में आपने एक कैनाल डिजाइन का जो प्रोग्राम बनाया है वो आपके प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक हो गया. उसको अगर किसी को मॉडिफाई करना है तो आपका प्रोग्राम पूरा समझना पड़ेगा, तभी उस मॉड्यूल को यूज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. लेकिन लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है. लाइब्रेरी में आपने बोला ये मेरा कैनाल का पैरामीटर आप डिजाइन करके दो, लाइब्रेरी विल डिजाइन इट एंड गिव द आउट. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि प्रोसीजर में नहीं था. आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कुछ प्रोग्राम में कि आप उसको एक्सेस डिफाइन कर सकते हो कि ये वाला मेरा प्राइवेट है या मेरा ये पब्लिक है या मेरा लोकल है. वेरिएबल आप डिफाइन कर सकते हो, but again that becomes complicated over time when your program evolves into a larger program. Okay, जब बहुत सारे फंक्शन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब ग्लोबल वेरिएबल्स को, प्राइवेट वेरिएबल्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. मूविंग ऑन. As I already said, it becomes difficult to identify what data is used by which function इन लार्ज प्रोग्राम. जब आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाता है तो ये चीज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, क्योंकि ऑल द ग्लोबल वेरिएबल्स आर अवेलेबल टू ऑल फंक्शंस. तो कौन सा फंक्शन आपका कौन सा वेरिएबल यूज कर रहा है, ये चीज आप आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है. या तो फिर आप एक प्रॉपर यूजर मैनुअल साथ साथ में डेवलप करते जाइए, जिसमें आप ये नोट करते जाइए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल मेरा इसी फंक्शन में यूज हो रहा है, और जब भी कभी उसको रीनेम करना है या चेंज करना है या उसका डेटा टाइप चेंज करना है तो हर जगह सारे फंक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा. तो जब प्रोग्राम बड़ा हो जाता है, like you have a few million lines of code, in that case it becomes really difficult to trace the origin of the bug.
जब कोई बग आता है तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, डिबग करना प्रोग्राम को मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू रीयूज द प्रोग्राम एंड मेंटेन द प्रोग्राम। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं हम अभी। तो प्रोग्राम को आपको रीयूज करना बड़ा मुश्किल है। आपने जो प्रोग्राम बनाया आप अच्छे से यूज कर लोगे, लेकिन कोई और यूज नहीं कर पाएगा। सो एज अ इंटायर programming community, it becomes difficult to share your program with others. Okay, if a new data meeting with you, if a new data is to be added, then all functions have to be modified. For example, one global variable is being accessed by, let's say, 30 functions. अगर आपको उसमें कुछ वेरिएबल में चेंज करना है या कोई एक नया डेटा करना पड़ेगा, राइट। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, एक छोटा सा, पहले उसका टाइप है इंटीजर। ओके, इंटीजर इज 2 to the power 8, 2 to the power 16, सॉरी। तो 2 to the power 16 है, वहां तक का वो कैलकुलेट कर सकता है। अब आपको उसको चेंज करना है ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट, ड्यू टू सम रीजन, आपको उसको चेंज करके उसको लार्ज में लेके जाना है। ओके, 2 to the power 32 पे लेके जाना है। उसकी जो वैल्यू परमिसिबल वैल्यू है वो आपका मान लीजिए 2 to the power 16 से 2 to the power 32 लेके जाना है। इन दैट केस वो वेरिएबल आपका जिस जिस फंक्शन में जहां जहां यूज हो रहा है उस जगह पे सभी जगह आपको चेक क्या के लगाना पड़ेगा, एक चेक लगाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको किसी इंटीजर से ऐड कर रहा हूँ या लार्ज से ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि आपने अगर उसको किसी इंटीजर से ऐड किया, लार्ज से ऐड किया, तो हो सकता है वो जो आपका फाइनल वैल्यू आ रही है वो आपकी नेगेटिव में चली जाए। एक बहुत टिपिकल केस हिस्ट्री आई थी, बहुत प्रोग्रामिंग कम्युनिटी में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। गंगम स्टाइल आया था PSY का एक गाना, गंगम स्टाइल, एंड इट बिकेम अ सेंसेशन ओवरनाइट। व्हाट हैपेंड आफ्टर लाइक अ मंथ और सो, यूट्यूब में जो उसका गंगम स्टाइल का जो व्यूअर्स थे, दे स्टार्टेड शोइंग इन नेगेटिव्स। और ये हुआ है रियल में। तो जो व्यूज थे, है ना, सीन बाय दिस वीडियो इज सीन बाय सो मेनी पीपल ना, दिस मेनी व्यूअर्स, वो व्यूअर्स नेगेटिव में शो हो गए थे क्योंकि नंबर ऑफ व्यूअर्स was stored in some data type and the actual number of viewers increased that capacity of the data type, तो वो नेगेटिव में शो करने लग गए। एंड देन इमीडिएटली यूट्यूब ने कभी सोचा नहीं था कि उसके किसी पर्टिकुलर वीडियो के इतने व्यूअर भी हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग हैपेंड। देन इमीडिएटली यूट्यूब की जो टीम थी वो काम करना शुरू करी, उसका जो डेटा टाइप वो चेंज किया डेटाबेसेस में, उसके प्रोग्राम में, एंड देन स्टार्टेड अगेन शोइंग इन अ पॉजिटिव सेंस। So these kind of things actually may happen when you don't anticipate कि आपका जो वैल्यू उसमें स्टोर होने वाली है वो किस लेवल तक जा सकती है। और उस केस में अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो आपको पूरा चेक लगाना पड़ेगा, पूरा मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो वेरिएबल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, सभी जगह पे उसका रिपरकशन क्या आने वाला है। इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये प्रॉब्लम बहुत ही इजीली सॉल्व होती है। एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको पोर्ट्रे नहीं करती या उसको मॉडल नहीं करती है। तो आपकी जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको मॉड्यूलर वे में अप्रोच लेना होता है, अब मॉड्यूलर वे की प्रोग्रामिंग करनी होती है, जो कि हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिलती है। ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी लिमिटेशंस जो हमारे प्रोग्रामर थे पास्ट में वो फेस कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू सम अदर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस or some kind of different programming strategy that was called as object oriented. Let's talk about object oriented. जो उसमें प्रोसीजर में लिमिटेशन थे, मेन उसको फोकस करके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलप की गई। और इसमें जो फंडामेंटल आइडिया है behind object oriented programming is to combine the data and functions that operate as a single unit which is called as encapsulation. तो आपका एक यूनिट के अंदर में एक यूनिट रहेगी, एक क्लास रहेगी जिसके दो पार्टीशन रहेंगे। एक पार्टीशन में आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे, एक पार्टीशन में आपके फंक्शंस हो जाएंगे, और ये फंक्शन रहेंगे इस वेरिएबल पे ही ऑपरेट करेंगे। और जो डेटा हमको उस क्लास को देना होता है दैट इज गिवन थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। तो जब हम उस क्लास को कॉल करते हैं उस टाइम पे हम उसके साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। आर्ग्यूमेंट मीन्स वैल्यूज देते हैं कि आप इस क्लास को इन पर्टिकुलर वैल्यूज पर रन करना है। इट इज सिमिलर टू अ फंक्शन but not entirely similar, because the variables which are inside that capsule, they are always protected from outside world.
उसको उस क्लास के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है अनलेस एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्टेड। हम उस पर्टिकुलर क्लास के वेरिएबल को भी ग्लोबल बना सकते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि इसमें गेटर एंड सेटर बनते हैं। गेटर एंड सेटर, सेटर मीन्स वेरिएबल को सेट करना है, गेटर मीन्स उस वेरिएबल की वैल्यू उठानी है। तो वो भी फंक्शन होते हैं। फंक्शंस में भी प्राइवेट, फंक्शंस में ऑल्सो भी पब्लिक। सो जनरली हमको जो आउटपुट चाहिए होता है वो हम पब्लिक फंक्शन से उठाते हैं, जो कि उस क्लास के अंदर होते हैं। वेरिएबल सारे उसके अंदर होते हैं, उसको हम ग्लोबल बना सकते हैं, पब्लिकली एक्सेसिबल बना सकते हैं, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। दैट यूनिट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो क्लास है, वो क्लास इटसेल्फ इज अ वेरिएबल टाइप। जैसा इंटीजर होता है, जैसा आपका फ्लोट होता है, जैसा आपका टेक्स्ट होता है, या जैसा आपका स्ट्रिंग होता है, उस तरह का डेटा टाइप ही क्लास होती है। क्लास इटसेल्फ इज अ डेटा टाइप, और उस डेटा टाइप से आप जब वेरिएबल बनाते हो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। दैट इज एन ऑब्जेक्ट। Objects can be used and reused and they are very easy to maintain. So if you find a problem कि ठीक है हमारा let's say one variable that I am using in a particular class is not able to meet the requirement of the real world, so I have to change the data type of that particular variable. So you have to go to that class and change the data type, that's it, and it will take care of everything else. You don't have to worry about any other function. And let's say your program has 30 classes and let's say 1000 functions and one main function. You have to care only about one particular class and change that variable and close that class. That's it. Entire program will take care of the everything else. Data is tied very closely to the functions that operate on that data. So variables and data is very closely associated to the functions, and only the functions within the class can operate on that data. This data is invisible from another classes and also invisible from the main program. Data of the object can be accessed only by the functions of that object. However, there are functionalities available when you can make the variable of that function, class, variable of that class available to another class or to the function or to the main function, but that is not advisable. Communications to the data is done through functions. As I said, जिसमें getter and setter होते हैं, means you want to get the value of a variable. It is not recommended that you get the value directly from the function by making it global. Don't make it global. Make a function which will return the value of that variable to the main program or to another class. So that is the correct way of object-oriented programming. As far as the core programming community is concerned, they will never ever use any global variable inside their program. They will never ever create any variable which is inside a class, a global variable, which is accessible publicly. They will always use getters and setters. Setter means change the value of that variable through the Sir, function. can you please repeat the sentence, sir? Just Okay. In a hardcore programming community, they will never ever use global variables, Okay. and they will never ever give access of a variable which is inside a class to the outside class of the main program. They will never ever make a variable which is inside a class accessible to another one. They will always create functions to set and get the value of that variable, that are called as getter and setter. Setter means Okay, sir. that is a small function which will set the value of that variable, and getter means it will get the value of that variable and give it back to the program. So that your variable is never exposed to the outside program, outside class. Now, what is the advantage of it? If you are creating a getter, setter, for example, I'm using a small function to set the value of a program of a variable. What is the benefit of a setter? It can do preliminary checks. Okay, जैसे कि
what is the age of a person, है ना, age of a person है वो उसमें as a variable stored है. Age can always be an integer. Now if I am trying to use a negative value on it, है ना, age of that person can never be negative. So what setter will do, it will check whether the value is minus or not. Okay, if you make that variable public, then anyone can, any program, any function can try to make it a negative value without any cross check. Okay, but if you are using a setter, then you can do a check. Yes, if it is positive, then I will set it. If it is less than 200, then only I will set it. 200 साल से बड़ा का तो आदमी होगा नहीं कोई. And if it is say if it is negative, it will return an error that age cannot be less than 0. If it is more than 200, then it will return an error. Please provide date of birth proof. Otherwise, I'm not going to change the set age to more than 200, like that. Okay, so these kind of checks can be done through getters and setters. That is why it is always recommended and it is always done. The hardware programmers, they are never going to make their class variables as the public variables. So this is a typical structure of an object-oriented program. You have different classes. These are the different objects. This is one object, this is another object, this is third object, and you have some data and some functions. Then you have some data, then you have some functions. Then you have some data, then functions. And these programs and these classes and these objects will communicate only through the functions. Data will always remain protected. Now let's talk about some concepts of the object-oriented program. We have many times seen these words, but what is the actual meaning of it and what is the importance of each of the word that we are going to discuss. So object-oriented programming, when we are talking about it, that is based on basic 6 principles. Any kind of object-oriented program is going to follow these 6 principles. These are the 6 principles that every object-oriented program is going to have: objects, classes, encapsulation, abstraction, inheritance, and polymorphism. So what are these that we are going to see? What is an object? An object are the basic runtime entity of an object oriented system, है ना? Objects are the basic runtime entity. जो भी class है आपकी, वो class, it's a module. That module is imported into the main program as a object. So that object, once you create an object, all the functions and data types of the class are imported inside the object, and you can have multiple instances of that class. Okay, so for example, a car will have a model, a year of manufacturing, a color, and you can have some functions, how to start, how to move, how to stop. Okay, ये मैं real world example से आपको correlate कर रहा हूँ. But and let's say you create of that class named as car. तो आप जैसे ही उस object को बनाओगे, variables and functions will come automatically. Okay, that is called as inheritance. So model नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, कलर नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, और कुछ स्टार्ट, मूव एंड स्टॉप. ओके, तो जैसे ही आपने उसमें मॉडल की एंट्री करी, यू कैन फंक्शन विच विल गिव whether fitness certificate is required or not. जैसे ज्यादा की एज होगी, when the model is more than 15 years old, then you will need a fitness certificate. So these kind of functions can be made. And कार और दूसरी कार, ये दोनों में आपके कुछ फीचर्स कॉमन है और कुछ फीचर्स हैं जो डिफरेंट हो सकते हैं. लाइक नंबर ऑफ व्हील्स विल ऑलवेज बी 4 ऑफ एनी कार. ओके, अनलेस इट इज अ लॉन्ग, जो प्रेसिडेंट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं लंबी वाली कार, उसमें कार के व्हील अलग होते हैं. अदरवाइज एनी नॉर्मल कार यू विल ऑलवेज हैव 4 व्हील्स. 4 wheels can be a private variable which will never be changed throughout. Number of wheels can never be changed, it is always 4. But yes, horsepower of the engine can be changed, cc can be changed,
the turning radius can be changed. Okay, and they are also needs to be changed setter functions. So they may represent one place item that a program can handle. इस तरह के आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, and class can be migrated or can be imported as multiple variables. So you have a car by Tata, you can have a car by Maruti, you can have a car by Maruti which is a specific model, like a Maruti car which is Alto or Wagoner or Ignis or any Swift Desire. Okay, and you can have a make, but some features will always remain common. So these kind of objects are instance of the class. Objects are not class. Objects are the instance. Okay, there is a difference. Instance मतलब आपने उस particular class के variables and functions को एक object में import कर लिया. इस object variable के बाद आप operate कर रहे हैं. Class will remain intact, and that class can as another variable. So a car नाम की आपकी एक क्लास है जिसको आपने इंपोर्ट किया मारुति कार, और उसी को इंपोर्ट किया आपने मारुति की ऑल्टो कार, उसी को इंपोर्ट किया आपने टाटा की नैनो कार, उसी को इंपोर्ट किया आपने कोई दूसरी कार. ओके, सो दिस इज अ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. Okay, whenever a program is executed, the objects will interact by sending messages to one another. Okay, means आपको एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शन से कम्युनिकेट करना है, you have to send a message to another. Is going inherit that class. A main program is going an object, then that object can be interacted by another objects, and they can with each other using messages. Okay, for example, customer are two objects in a program, then the customer object may send a message to the account object requesting. So customer है, customer नाम का object है, उसको उसका account से bank balance उठाना है, then it will ask the account object that give me the bank balance particular customer, and it will give the customer ID. Okay, it will give the customer object with the customer ID कि मुझे इस particular customer का bank balance चाहिए. Then account का जो object है, it will take that customer ID, it will check whether it is available in database or not. अगर database available है तो उसका account का balance जाएगा, वो balance वो उसको transfer कर देगा as a value. ये इसका account है. अगर नहीं है, it will throw an error, no such customer exists, like that. Each object contains data and code to manipulate the data functions which are okay. So you can have a class which is named as car, and objects. It can be Apollo, it can be Mini, it can be Betel, it can be Maruti, it can be Alto, whatever. Okay, so classes are also called as user-defined data types. Okay, they are data types. जैसा integer है, जैसा float है, जैसा आपका string है या text है या char है, like that. These are user-defined. Object contains code and data which can be made user type in classes. Okay, object के अंदर आपका code और data है, functions will remain same. However, जो object बन जाते हैं उसमें आपका variable आप change कर सकते हैं based on the requirement. Like for Maruti 800, the CC value will be 800. For Swift Desire, the CC value will be 1200, like that. Objects are the variable of a class. As I said already, the class जो आपकी है, that is a data type, and when that data type is defined, a variable is defined data type as that class, that variable becomes an object. Once a class has been defined, we can create any number of objects for that class. तो आपने एक बार लाइब्रेरी बना ली कार नाम की, उसके बाद आप जितने चाहें उतने वेरिएबल बनाइए. That's up to you. We can create the objects of class using following syntax. Syntax क्या रहता है इसका? क्लास नेम लिखा रहेगा और उसके आगे में ऑब्जेक्ट का नाम लिखा रहेगा. जैसे क्लास नेम में आप लिखते हैं, जैसे वेरिएबल डिफाइन करते टाइम लिखते हैं इंटीजर ए. इंटीजर इज द डेटा टाइप
A is the variable name. Similarly, class name is the data type, class name, and then the object name. Here the class name is the class which is already created and imported, and object name is the user defined name. You can have any kind of name. Okay, so for example ये जो है student नाम की अगर आपकी class है तो आप student लिखेंगे. It is mostly case sensitive. स्टूडेंट में एस अगर कैपिटल है तो एस कैपिटल ही लिखना होगा. स्टूडेंट राम कॉमा श्याम. अब उस स्टूडेंट नाम की क्लास में आपके वेरिएबल हो सकते हैं रोल नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ एंड मेनी अदर. एंड देयर आर टू स्टूडेंट्स राम एंड श्याम. राम की एज अलग हो सकती है, श्याम की एज अलग हो सकती है. राम के मार्क्स अलग हो सकते हैं, श्याम के मार्क्स अलग होते हैं. राम का और श्याम का रोल नंबर अलग होगा. तो these are values are stored inside the objects. Class will remain same. क्लास का नाम है स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट का नाम है राम एंड श्याम. ओके, सो हियर राम एंड श्याम आर द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फॉर द क्लास स्टूडेंट. नेक्स्ट इज इनकैप्सुलेशन. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ अ कैप्सूल. ओके, कैप्सूल में उस कैप्सूल के अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर के वर्ल्ड से प्रोटेक्टेड है. तो एक कैप्सूल में दो पार्ट होते हैं. रेड एंड इसमें रेड एंड व्हाइट दिख रहा है. So one part will contain the variables, one part will contain the functions. In some cases, in some languages, the especially Java and Android, they are called as methods. Functions का ही नाम है methods बोलते हैं. Java में functions को methods कहा जाता है. So method and functions, they are the same, just the name is different. Function same. So you will have some variables and some functions, and they are enclosed inside a capsule. So that capsule is isolated from the outside world, from the outside functions, and all the variables, they are protected inside that capsule, and nobody can change that variable except the functions which are inside the capsule. So that is the encapsulation. So in simple word, encapsulation is a process of binding data members, means the variables and properties, and member functions, that is the methods, into a single unit. That's it. Class is the best example of the encapsulation. Okay. Through encapsulation, the data is not accessible to the outside world, and only those functions which are wrapped inside the class can access those variables. Encapsulation solves the problem at the implementation level. जब प्रोग्राम बड़ा होता है उस टाइम पर आपकी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व करते हैं. क्लास कैन स्पेसिफाई हाउ एक्सेसिबल ईच ऑफ इट्स मेंबर्स आर. इवन सम फंक्शंस के कुछ फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं आपके क्लास में जो कि प्राइवेट है. प्राइवेट फंक्शन मींस वो वाले फंक्शन उस क्लास के अंदर के ही दूसरे फंक्शन को विजिबल रहेंगे, किसी और बाहर को विजिबल नहीं होंगे. सो देयर कैन बी सम global functions, sorry, public functions, some private functions. Generally getter setter जो होते हैं वो आपके पब्लिक फंक्शन होते हैं जो कि बाहर दिखाई देते हैं. दूसरे क्लासेस या दूसरे प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकते हैं, but not the some private functions. There are some private function like calculating the determinant of a quadratic equation. So that determinant is not required to be exposed outside. क्योंकि आपको केवल x1 x2 की वैल्यू चाहिए. डिटरमिनेंट की वैल्यू तो इंटरमीडिएट है, वो आपको जरूरत नहीं किसी को बताने की. सो डिटरमिनेंट यू कैन क्रिएट अ प्राइवेट फंक्शन व्हिच विल कैलकुलेट एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ओनली बेस्ड ऑन a, b and c. That's it. So these kind of private functions can also have it. Encapsulation, a class can specify how accessible each of the members are, like variables, properties and methods, to the code outside of the class. That we have already discussed. Now next term which is very much useful in object-oriented programming is the abstraction. Abstraction refers the representation of necessary features without including more detail and explanation. Abstraction मतलब जैसे abstract art होती ना, abstract art आपने सुनी होगी, उसमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है. जैसे for example, I would like to give an example of अभी देखिए, for example, some of the paintings are very detailed, but let's say this one.
बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। इसमें आईज भी डिटेल में नहीं बनी है, माउथ भी डिटेल में नहीं बना है, बट वी नो इट्स अ पेंटिंग ऑफ कृष्णा, राधा कृष्णा। ओके, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्शन, मींस आपको सारी डिटेल देने की यूजर को जरूरत नहीं है। सिंपल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी अगर हम देखेंगे, सो दीज आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ओके, दीज आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, यूजर को बहुत ज्यादा नहीं बताना है कि अंदर क्या चल रहा है, यूजर को बहुत ज्यादा ये नहीं बताना है कि प्रोग्रामिंग अंदर कैलकुलेट कैसे कर रही है, so that user is not overwhelmed with the program. Sorry. So abstraction is the real power of object oriented programming, जिसमें कि यूजर के पास ज्यादा कंट्रोल होता नहीं है, और यही इसकी रियल में कहूंगा स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कैलकुलेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, जिसको कि सॉल्व करने का लोगों ने रिसर्च कर करके, एंड they have invested lots of time to perfect that program, and they have created a class and they have published it. Now that is a very complicated part. Now if the user is given access to that code, then some कोई नो शिक्षा टाइप का यूजर आके उसमें छेड़छाड़ करके उस अच्छी भली क्लास को खराब कर सकता है। सो यूजर शुड ओनली बी गिवन द एक्सेस कि आप भैया इनपुट दो, आपको आउटपुट मिल जाएगा, काम अंदर कैसे हो रहा है वो चीज आप मत करो। इट्स अ ब्लैक बॉक्स टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। ऑल्दो यू कैन ऑब्वियसली एडिट द क्लास, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड। एक बार जब कोई क्लास या लाइब्रेरी बनाई जाती है तो उसमें बहुत रिसर्च करके, बहुत ट्रायल एंड एरर करने के बाद उस प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। So generally, it is not recommended to modify the existing libraries which are in place from few years. What is recommended is, अगर आपने कहीं से वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है, and if you find some kind of bug or some kind of improvement that you suggest, you don't do it yourself. You post it in the forum, and the original developers जो हैं वो उसको ठीक करके फिर से पब्लिश करेंगे। That is the real way how the programs are evolved. कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, कोई बग दिख रहा है, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप दिख रहा है, या कोई एडिशनल फीचर दिख रहा है, वो आप उनके फोरम पे पोस्ट कर दो। जो रियल डेवलपर हैं, जिन्होंने उस क्लास को डेवलप किया है, उस प्रोग्राम को डेवलप किया है, लाइब्रेरी को डेवलप किया है, they will include those features and publish it again, then you download and use it in your program, so that not only you use it but also the world uses it. बाकी की दुनिया में जो प्रोग्रामर्स है उनको भी आपका जो आपने बग निकाला है उसका बेनिफिट दूसरों को भी मिलना चाहिए। If you are using that community, you should be helpful to that community. And that is why the programming world is developing so fast, because this entire community of millions of people are working together to evolve the programs, computer programs. And now AI has come into picture. Now even AI is helping the programs to improve. Okay. Oh, just a second. Like for example, एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है, जैसे कि आपको ये पता है कि आपको अगर आपने एक्सीलरेटर को प्रेस किया तो आपके कार के इंजन की स्पीड बढ़ेगी। अब अंदर का आपको कैलकुलेट कैसे नहीं करना है, कितना फ्यूल जा रहा है, कितना स्पार्क हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब चीजों के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। और कार का मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा भी नहीं, उसको ब्लैक बॉक्स की तरह रहेगा इंजन को। आपको सिर्फ वो ये बताएगा कि आप तो एक्सीलरेटर पे प्रेस करो तो आपका कार की इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर गियर में कार है, क्लच छूटा है, तो आपकी कार की स्पीड बढ़ने लग जाएगी, कार खुद चलना शुरू हो जाएगी। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यूजर हैज टू नो। अंदर में क्या चल रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं। हाँ, ये चीज है कि आप एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हो तो जिस रेट पे प्रेस कर रहे हो उस रेट पे अगर वो प्रेस नहीं हो रहा है तो आप खुद अपनी कार में चेंज कर लोगे। उससे बेटर है कि आप कार के मैन्युफैक्चरर को बताओ कि ये बग आ रहा है हमारी कार में, ताकि वो उसके सारे मॉडल में वो इम्प्लीमेंट कर दे। ओके, आपने अपनी खुद की कार में कर लिया तो वो बाकी किसी को यूजफुल नहीं होगा। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन में जैसे कि कुछ प्राइवेट वेरिएबल है, कुछ प्राइवेट फंक्शन है, कुछ पब्लिक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, कार को स्टार्ट कैसे करना है, यूजर को इंटरफेस देना है, तो आपको टर्न ऑन का एक फंक्शन आपने यूजर को दे दिया। ब्रेक लगाने का, एक्सेलरेट करने का, गियर चेंज करने का, ये हमको यूजर को एक्सेस देना है। लेकिन ब्रेक पैड किस स्पीड से मूव कर रहे हैं ब्रेक लगाते टाइम पे, ये यूजर को बताने की नीड नहीं है। ब्रेक पैड की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये सब चीजें यूजर को बताने की नीड नहीं है। किस तरह से स्पार्क क्रिएट करना है, ये यूजर को बताने की नीड नहीं है। लाइक दैट। Inheritance, another big achievement, or another big I would say not achievement, big
big strength, I would say, of the object-oriented programming is the inheritance. Inheritance का मतलब ये होता है, you can create a new class from the old class, and using that new class, you can incorporate some special features. Like, आपने कार खरीदी, उसमें आपके कुछ old feature आए हैं. That is the old car that you have bought and bring it here, है ना? आपने अपने घर पे ले आए, उसके बाद सनरूफ उसमें नहीं थी, आपने सनरूफ अलग से लगवा ली. That is inheritance. उस सनरूफ का एंजॉय करने के लिए आपको पूरी कार बनाने की जरूरत नहीं है. आप कार मार्केट से खरीद लो, उसमें सनरूफ लगाने का काम आप कर लो. दैट इज इनहेरिटेंस इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, कि आप एक पुरानी क्लास या पुरानी लाइब्रेरी उठा लो जो आपके मार्केट में मिल रही है, इजीली अवेलेबल है, एंड यू वांट टू गेट सम एक्स्ट्रा आउटपुट or some extra feature from that class, you modify that class. Okay, so it will inherit all the features, all the variables, all the functions from the old class. Then you can add some extra variables, some extra functions, and you can modify the some of the functions if required. Although it's not advisable, but you can do that. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एंड्रॉइड. जो आपके एंड्रॉइड मोबाइल आते हैं, उसमें बेसिक जो एंड्रॉइड है, उसके ऊपर सभी मैन्युफैक्चरर्स अपनी एक लेयर चलाते हैं. ओके, सो MIUI इज डिफरेंट देन सैमसंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम. सैमसंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफरेंट देन मोटोरोला ऑपरेटिंग सिस्टम, बट बैकग्राउंड में सभी के एंड्रॉइड चल रहा है. सो एंड्रॉइड की बेसिक क्लासेस है वो सभी के पास अवेलेबल है. हाउएवर उसका लुक, उसका फील, उसका यूजर इंटरफेस को थोड़ा थोड़ा ट्विक करने के लिए हर कोई अपना अपना एक लेयर दैट इज. Yeah, please mute yourself. Yeah. Yes, sir. Please continue. Sir, I have muted everyone. Please unmute yourself. Rato sir, you are muted. Really sorry. So the thing is, you can have a very basic real world example, animal class, out of which you can have dog class, cat class, and cow class. So what are some basic features that will be inherited? Like they will all have two eyes and so on. But some basic features will be changed. Like dog will look different than cat, cat will look different than cow, size of dog will be different than cat, will be different than cow, like that. So some basic features, some basic functionalities will be imported from the old class, that is inherited from the old class, and you can add some additional functionality to it. Polymorphism. Polymorphism means one interface, multiple implementation. So one class can, let's say, do a lots of functions. Like, okay, one class can do a lot of functions, and out of which you need only one function, right? So you don't have to delete everything else. So you can import entire class as a whole, and you can utilize only that one particular part of the program. The other parts of the program will be kind of in hibernation. Okay, they will be invoked only when you call them. Okay, the variables that are inside that functions and inside that class which are not being used will not consume memory. That is also a big advantage. So अगर आपने एक क्लास को इंपोर्ट किया है और उसमें से कुछ वेरिएबल या फंक्शन आप यूज नहीं कर रहे हो, वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करेंगे. So let's say if your class is like 30 MBs and you are using only 50 KB of it, it will only consume 50 KB of it. बाकी का 30 MB आइडल पड़ा रहेगा, आपका केवल हार्ड डिस्क में स्पेस खाएगा. अदरवाइज it will not consume RAM, it will not consume processing power, it will not consume anything else. Okay. So that is single interface, multiple implementation, like a steering wheel. So steering को आप टर्न करोगे राइट में तो कार राइट में जाएगी, लेफ्ट में करोगे तो लेफ्ट में जाएगी. अब इसमें
मारुति वाले का मॉडल अलग है, टाटा का मॉडल अलग है, हुंडई का मॉडल अलग है, लाइक दैट। सबका मैकेनिज्म अलग अलग है। व्हील जो है, व्हील इज कनेक्टेड टू द स्टीयरिंग व्हील इज कनेक्टेड टू द व्हील्स, to the tires in different ways. Some may have hydraulics, some may have gears, some may have motors, some may have power steering, but ultimate implementation is कि wheel को turn करेंगे, steering wheel को तो car turn करेंगे, that's it. Okay, so that is polymorphism, and that makes the program very easy. Okay, so you can have a single interface which will remain common for every program, but implementation can be multiple at different places for different purposes. So this is kind of concluding slide. So I started 15 minutes late, so I'm closing 15 minutes late. So this is a kind of concluding slide in which we are going to conclude with the benefits of object-oriented programming as to why people had to migrate from the sequential or procedural programming to the object-oriented programming. The first one is you can have user-defined data types that you can create. These data types are the classes or libraries. They can be incorporated, imported, or inherited in form of variables, and those variables which are created using a class data type all called as objects. Code can be reused using inheritance. So same code can be used by me, can be used by you, can be used by anyone in the world using inheritance. So whatever I have created, I can inherit to others. Others can use it, do some changes, and then they can create a new library, publish it, and then others can inherit that advanced or the modified. Data and functions, also functions, can be hidden by encapsulation. Functions can be overloaded by polymorphism. So one particular interface for multiple implementation can be achieved using polymorphism. Function overloading means आप एक ही फंक्शन को अलग अलग तरह के डेटा टाइप देंगे, दैट इज ओवरलोडिंग. अगर आपने एक फंक्शन को टेक्स्ट का इनपुट दिया तो उसको किस तरह से बिहेव करना है, अगर उसी फंक्शन को आपने अगर इंटीजर दिया तो कैसे बिहेव करना है, उसी फंक्शन को अगर आपने फ्लोट दिया तो कैसे बिहेव करना है, दैट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट वेज. So that is also polymorphism. तो एक ही इंटरफेस है, आपका फंक्शन सेम है लेकिन आपका वेरिएबल का टाइप है, एक केस में टेक्स्ट है, एक केस में आपका इंटीजर है, एक केस में आपका फ्लोट है, तीनों केस में वो अलग तरह से डिफाइन करता है. दैट इज पॉसिबल यूजिंग polymorphism. That is also called as function overloading. Some functions or operators can be used for multitasking. Okay, तो कुछ फंक्शन और कुछ ऑपरेटर और कुछ क्लासेस को आप एज अ मल्टीटास्किंग यूज कर सकते हैं. मींस लेट्स से इन माय मोबाइल आई एम ऑन अ कॉल और उसी कॉल के दौरान मुझे अपना मैसेज भी चेक करना है. आई कैन मिनिमाइज दैट विंडो एंड आई कैन चेक माय मैसेजेस. दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो जब एक कोई प्रोसेस फोरग्राउंड में चल रही है, उसको आप बैकग्राउंड में ले जाके फ्रंट में कोई दूसरी फोरग्राउंड में प्रोसेस ला सकते हो. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीटास्किंग बेसिकली. तो एक ही प्रोसेसर एक टाइम पे एक से ज्यादा काम कर रहा है. ऑब्वियसली आपका मोबाइल अगर आइडल भी रखा है तो भी वो एक टाइम पे एक से ज्यादा काम कर रहा है. आपका कंप्यूटर आपके सामने जो अभी है उसमें ऑलरेडी मल्टीटास्किंग चल रही है. अभी आप देखेंगे तो मेरे लैपटॉप में व्हाट्सएप भी खुला हुआ है, मीटिंग भी चल रही है, साथ में एक्सेल की और पावर पॉइंट की एक फाइल खुली हुई है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में प्रेजेंटेशन भी चल रहा है. सो दिस इज मल्टीटास्किंग. एंड most of the functions, many of the functions, not most, many of the functions can be used for multitasking. The object-oriented system can be easily upgraded from a small system to a large system. क्योंकि क्या होता है, once you create a class, once you create an object-oriented program, that class can be used as an object, and then कैसे मैं बताऊंगा आपको, just let me just give an example. I'm just going to give you an example. This is one class. This is another class created by my friend, and then another class which is created by someone else, and this is another class which is I copied from internet, and I have created one big program like this. This one big program can also be shared as one class. Okay, so
one class can actually inherit multiple classes. So this big program, now this entire big program, ये वाला, सॉरी, ये जो रेड कलर का प्रोग्राम है ये मैंने बनाया. इसमें मैंने कुछ कोड मैंने खुद ने लिखा, कुछ क्लास मैंने खुद ने लिखी, कुछ क्लास मैंने इंटरनेट से कॉपी करी, कुछ मेरे फ्रेंड ने कॉपी करी, और ये बड़ी रेड कलर की जो क्लास बनी है इसको मैंने पब्लिश कर दिया. इस बड़ी रेड क्लास का कुछ और फंक्शन हो सकता है, कुछ एडेड पावर हो सकती है, एंड दैट कैन बी. नाउ समवन एल्स कैन इनहेरिट दिस थिंग and someone else can add another program and publish it. That is why programming community is growing so fast, because people are sharing with each other. किसी को भी कोई नई चीज मिलती है वो इमीडिएट इंटरनेट पे शेयर करता है, गिटहब पे शेयर करता है कि ओ आई हैव फाउंड समथिंग न्यू, आई हैव एडेड इट इनटू क्लास एंड पब्लिश्ड इट, एनीवन हु वांट्स टू यूज इट. And that is why open source softwares are becoming so powerful nowadays. Some of the open source softwares are even stronger and more powerful than the licensed softwares. Linux is a very good example. Sir, in that case, sir, first you have made one program. Can I change in that one? Or can Yes. I add one another one only can I add? Definitely, that most of the programs are open source. You can change any kind of thing, but that is not recommended. Why it is not recommended? Generally, जो library create करते हैं वो लोग काफी research, काफी trial and error के बाद में करते हैं. So if you change some code of it, you don't know कि उस library में और कहाँ का effect हो रहा है. So what I suggest is, if you want to change something, you post it on the forum. Generally, every library has its own forum. आपने post किया उस पे, they let the developers change it. Let the developers change it so that it will be useful for the other world also. And if that particular change is not beneficial for the program, developers or coders will actually reply to you. They will reply on the forum that if we change this particular thing, these are the problems that are going to come. No, in that case, sir, if I want in my program that change, I can use that one. I am not going to Yes, publish it. definitely. Yes, definitely you can do that. That I can use, no? Yes, definitely. Okay, sir. Thank you. And it will ultimately result in maintenance cost, because you don't have to reinvent the wheel. किसी ने पहिए को इन्वेंट कर लिया, आप सीधे इस्तेमाल कर लो. किसी ने वो लाइब्रेरी इन्वेंट कर रखी है, आप सीधे अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर लो. So you will require less maintenance cost, and it is very simple to implement. So आपको क्या होता है, जनरली जो लाइब्रेरी होती है, the classes that are created, the libraries that are created, group of classes, modules that are created online by someone else, they generally come with a readme file. So that readme file contains the instruction on how to use that particular library. So that readme file will always contain, there is also a license file which will give a disclaimer कि आप जो प्रोग्राम यूज कर रहे हो उससे कोई लॉस होता है तो we will not be responsible, kind of. आप जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं एज इज दे रहे हैं, इसके पीछे कोई लायबिलिटी नहीं है, kind of. But that is okay for us, कि हमको हमारा काम होना चाहिए बस. So that kind of disclaimer is also there. Plus हर लाइब्रेरी के साथ में एक रीडमी फाइल होती है कि ये प्रोग्राम क्या करता है, इसको क्या इनपुट देना होता है और क्या आउटपुट आते हैं, इनपुट के क्या डेटा टाइप होते हैं, आउटपुट के क्या डेटा टाइप होते हैं. जनरली इस तरह का एक फॉर्मेट होता है. So these are the some very basic and very बहुत हरिंगली मैंने ये चीज बताई है आपको, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब करना शुरू करेंगे, you will completely avoid use of procedural programming, because once you start procedural programming ना, you will see थोड़ा सा difficult होता है migrate करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, but once you start doing it, then you will actually realize कि procedural programming is really tough to maintain. छोटे प्रोग्राम आपके 100-200 लाइन के प्रोग्राम में तब तक इजी है, तब तक आई वुड से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाने की नीड नहीं है. बट वंस योर प्रोग्राम गोज इनटू थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड और मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, देन इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रोसीजरल प्रोग्राम्स. Then you have to migrate to the object oriented. So that is my submission. I have shared my mail and mobile number. If you have any kind of query, you can ask it. I'll be really happy to answer that. Thank you. Yeah, now I would like to request participants, we can have one or 2 minutes for question and answer. Even afterwards, you can post your question in the course forum. Sir is there in the forum. He can answer as per his convenience. Now you can unmute yourselves and pose your question.
Sir, one question, sir. Can I ask? Yeah, please. Yes, Regarding the please. procedural language, उसमें suppose suppose I want to add, divide and multiply, ठीक है? So मैंने क्या किया? I made a file like for adding, उसमें add का functions है, multiply का भी function है, वो दूसरा file है, और third division का file है. So उसमें सब functions अलग-अलग करके किया है. सपोज मैंने मेन फंक्शन में इनको इंक्लूड करके किया है एज पर सपोज सी प्रोग्राम का ही. सो मैंने उस लाइब्रेरी मैंने मॉड्यूल को इंक्लूड करके फंक्शंस को कॉल किया है. सो आई कैन रीयूज दैट फंक्शन ना, दैट वे आल्सो. सो आप रीयूज कर सकते हैं, बट आपके प्रोग्राम में कर सकते हैं, कोई और नहीं कर पाएगा. आपने वो जो फंक्शन बनाया है, दैट फंक्शन यू कैन यूज, बिकॉज उसका डेटा टाइप लगना है, क्या नहीं लगना है, मोस्टली इट विल बी डेल्ट यूजिंग द ग्लोबल वेरिएबल्स. So the thing is, others will not be able to use it. जब तक आपका प्रोग्राम छोटा है, तब तक आप उसको मेंटेन भी कर पाओगे. उसको इनफैक्ट प्रोसीजर प्रोग्रामिंग छोटे प्रोग्राम के लिए इजी होती है. प्रोसीजर प्रोग्राम का सिंटेक्स भी इजी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के मुकाबले. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, उसमें आप प्रोसीजर तो चला ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रोसीजर प्रोग्राम आप चला सकते हो, दैट इज बैकवर्ड कॉम्पिटेबल. जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं चला सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में आप प्रोसीजरल तो चला ही सकते हो. देयर इज नो पॉइंट इट, देयर इज नो क्वेश्चन इन इट. बट द थिंग इज, जब आपके प्रोग्राम बड़े होते हैं उस टाइम पर क्या होता है, आपका एक जो फंक्शन है आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो. दैट इज इन प्रोसीजर आल्सो, दैट यू एग्री विद मी कि आपका एक फंक्शन है, प्रोसीजरल लैंग्वेज में भी आप उसको मल्टीपल जगह यूज कर सकते हो, राइट? But the problem comes when the function starts to change the global variables. Okay. तो उस जगह में प्रॉब्लम आती है कि आपका कौन से फंक्शन का कौन सा इंस्टेंस उस ग्लोबल वेरिएबल को चेंज करता है, यू डोंट नो. Okay. That will create That is the problem that is in procedural problem. उसमें at a time there may create a problem. If any of the functions will be like that variable has been changed, then उसका global will be affected. Okay. Yes. Am I right, sir? Yes, right. Thank you, sir. Yeah. Anyone else? Excuse me, sir. Yes, please. I have a doubt. So these classes you guys are saying, those are made up of procedural programming only, right? No, they are objects. Or they made of Procedural objects? programming. Okay. Yes, procedural programming नहीं होगी वो. प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में आपका एक मेन प्रोग्राम इनिशिएट होता है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप, देन फोर्थ स्टेप, लाइक दैट. Okay. एंड क्लास में ये वाला जो लाइन का कोड है, this code entire acts as a unit, one single unit that can be imported or inherited inside the main program. That is the अगर हम एक क्लास को इंपोर्ट करेंगे तो क्या मैं उसको फिर से फिडल कर सकता हूँ, उसके अंदर जाके प्रोसीजर प्रोग्रामिंग से उसको फिर से चेंज कर सकता हूँ क्या वो क्लास को? कर सकते, बिल्कुल कर सकते. In that case, sir, if somebody else is using the same function, same object, and he is changing, and if I want to change, then conflict होगा? नहीं, वो तो आप कॉपी बनाते हो ना. जैसे इंटरनेट पे कोई फंक्शन अवेलेबल है, कोई क्लास अवेलेबल है, उसको आप अपने लोकल पीसी पे कंपाइल करोगे ना, लोकल पीसी पे या सर्वर पे कहीं पे लगा हुए, वहां पे आप एडिट कर रहे हो. आप जो आपका गिट पे जहाँ पे नेट पे अवेलेबल है उसको आपने चेंज नहीं किया. Okay. And they will not even allow it. They can never allow outsiders to change their program. Generally या फोरम पे जो बग्स पॉइंट आउट होते हैं, उन्हीं को वो खुद से चेंज करते हैं. Okay. Outsider to change their program unless it's a part of their teammate. तो इनके ग्रुप बने होते हैं जनरली, जो बड़े सब रूटीन डेवलप होते हैं, बड़ी क्लासेस लाइब्रेरीज डेवलप होती हैं, उस केस में they are not one single programmer, they are generally a group of programmers. So once you prove your worth that you are actually useful to them and you can actually contribute a lot to them, they will add you to their group and then you can start modifying them. Again, there are some constraints. जो भी कोड होता है that is sent for a review to a higher level coder. तो अगर आपने कुछ चेंज किया भी है, that will not be immediately published, that will go for a review, and once that change is accepted by a higher level coder, then only it will be
added as a branch inside the main. So there is a trunk. Trunk means the main program, and then there are branches. वो टेक्निकल ज्यादा है, तो गिट में आप जाएंगे गिट की टेक्निकलिटी में. सो गिटहब में देयर इज अ ट्रंक मींस द मेन प्रोग्राम, एनीथिंग इनटू द मेन कोर फंक्शनैलिटी. जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल ना, जस्ट अ सेकंड. ओके. सो जो कोर फंक्शनैलिटी प्रोग्राम की है उसमें कुछ एडेड अगर फंक्शनैलिटी देने, दैट विल बी ब्रांचेस. Okay, so you can add a branch, and if someone feels that yes, this branch can actually be part of the core program, then that branch is added to the core. So that is done by high level programmers. Generally, the founder of the program will do these kind of core level changes. Very good afternoon, sir. I am from Irrigation Authorities Department, Government of West Bengal. So, sir, you are in Farakka Barrage project. So, this is actually maybe in future we may be in connection. So, sir, my question is, in our department, say water resource projects, where we can apply this Python programming. That is my question, sir. And So I think already that have you worked on it regarding Farakka Barrage or other field in water resource? This is my I think Chaitanya will be able to answer it in a better way, because I focused only on the object-oriented concept. Basically this program is an introductory program covering the basics, and in the second week we will be covering how to do data analysis, how to make use of packages. Sir has told about modules and packages. So we have the module of pandas. We will be covering tomorrow the module of pandas for data manipulation of tabular data. Then data visualization package is there. So we will see. We will cover but we will not be able to do in-depth coverage of applications. This is an introductory course, but you will get an idea. Yeah. Okay. Yeah, sir. So I think we can conclude the session. Other queries, if there are any queries, I would like to welcome the participants to post their queries in the course forum. I will forward them to Manish Rato, sir. He is also there in the course forum. So if there is any query, I will let him know and he can answer. So I thank Manish Rato, sir, for accepting our invitation and delivering a very informative session, very conceptually, many concepts. I hope participants got clarity on why the importance or the functionalities of an object-oriented programming language. Yeah, thank you very much, sir. Thank you, Chaitanya. It's always a pleasure for me to interact with the NWA and the participants who are coming to the NWA training program. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, presentation slides, I have them, but I think if there is any modification, you can send it. Yeah, yes. I will share it. I'm sharing it just in 2 minutes. Oh, okay. Thank you. So we will upload the next session at 2 o'clock regarding error and fire handling on the web, on the e-learning portal. Thank you very much.